गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है वन मार्क सोल्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ और डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट चैप्टर्स के लिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और इसी सीरीज में आज हम क्लास 12 के लिए कंट्रोलिंग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 12 के लिए, जिसके लिए हमारे साथ जो मैं सर का स्वागत करती हूँ। मैं सर का थोड़ा सा वेलकम सर, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे व्यूवर्स की तरफ से, हमारे वन मार्क की टीम की तरफ से। मैं सर का थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि सर का नाम है हर्षित हाथी सर, और पहले भी सर बहुत सारे सेशन कर चुके हैं, बहुत सारे आपके चैप्टर्स के लिए आप यहाँ पे कंटेंट शेयर कर चुके हैं सर। और सर पीजीटी कॉमर्स है कृष्णा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पाटन गुजरात में। और मैं व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, चैट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि आपको बाद में जब सर का सेशन ओवर हो जाएगा तो आपकी क्वेरीज सर सॉल्व कर सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी आपके अपकमिंग वेबिनार्स रहेंगे, हमारे जो अपकमिंग वेबिनार्स रहेंगे उनके भी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाते हैं तो हमारे इससे भी पहले जो सर ने सेशन किए हुए हैं और भी सब्जेक्ट्स के, वो आपको सभी मिल जाएंगे वहाँ पे। और मैं व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि जो हमारे कंटेंट पार्टनर हैं वो वन क्वेश्चन एवरी टाइम है, जिनको आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। और हमारा भी पेज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो और लास्ट में एक कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में मैं फीडबैक फॉर्म शेयर करूँगी सेशन से ही रिलेटेड, कि आप अगर फिल करेंगे तो 40% अगर आप मार्क्स उसमें लेके आते हैं देन श्योर आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सर को हैंड ओवर करती हूँ, और सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आप कंटिन्यू करें। Okay, everybody. Good afternoon. A very good and warm afternoon, I suppose. As already winter season is there, very good cold is just around. So I would like to wish you a very warm afternoon. So again, we are back. Now most of the students are familiar with me. We shall just straight away start the session. Before starting before starting this session, I would like to tell that we are going to conduct this session on chapter number 8 of Business Studies, Standard 12, Controlling. Before starting this session, let me tell you something that what do you mean by control? If you say that controlling is just a negative activity, that control means you just always visualize that a person is just after running after someone with a stick and controlling everyone. As you have got a idea about teachers and other everybody. But it's not like that. Here in management, controlling is something you can say a positive activity, and it is always something that it is related to the planning. So when we plan, we always plan for the future, right? We always see that what will be there in the planning. We think in advance. We just plan it in everything in advance. What to do, how to do, that is being done in advance. Now, whether that activity has been successfully done or not, whether those activity which we planned, that is what to do, how to do, whether that activity is being done or not successfully. Now, what are the standards? How you can say that these activities are done or not? Or if there is any problem in those activities which do not finish as per our plan, what can be the defects in those actions? So these are all the questions that has to be answered. Say, for example, you are thinking that you should score 80 more marks in business study, and in this pre-board, you are not able to score that much marks. So where things went wrong? So what you are going to do, you are going to compare your original performance that you already scored something marks. Suppose you are expecting 80 marks and you have scored something like 70, 65 or 70 marks. So you'll just compare that I was expecting 80 marks. That was my planned activity. That was my planned process or planned action. And then you just compared it, that planned action with the actual action. And you scored only 65 to 70 marks. Now, what went wrong? So that is now a simple control. Is that clear? So you just control the things. Actually, we can't say that we can control everything. There are a lot of things which is not in our control. But as such, in management, we do two process. One is planning
where we think in advance. And the last one, that is controlling, is considered, as I told you, the last function, where we see that whether whatever we planned went according to the activity which we planned really happened according to that or not. So students, we just start the session. That always we coming to that MCQ session, and as such you all know the patterns, so we just continue that pattern. And here again important syllabus breakup is there. You can see here that controlling is also one of the important topics between of staffing, directing and controlling, carries 20 marks. Some of the topics has been deleted as the session progresses. I'll let you know what were the things that has been deleted. Let us see what we are going to discuss straight away. So that is controlling concept and importance that we are going to discuss. These are the portion that is included in our session today. Understanding the concept of controlling, explain the importance of controlling, process in that is process of controlling, steps in process of controlling, and we'll discuss the steps in the controlling process. So these are the overall topics that we are going to discuss now. Topics that are going to cover in today's session is, of course, whatever I told you, but majority these are the topics that we are going to cover. Meaning and definition of controlling. Then we have got importance of controlling, process of controlling, and of course we all know that we have got OTP, that is objective type questions, which includes MCQs, fill in the blanks, match the following in one word description, which also includes case studies. As we progress, I think most of the students now are familiar with me, so they know how the session, what type of question is being included. Similar way, as I have included in the previous sessions, the same is also here, but the chapter is controlling. So students, let us see. This is how somewhat you can say controlling goes, where a person, you can see, is controlling the things. He's a manager and he controls that. Is what he's doing actually. You can say he's controlling the things with the wheels. Okay, so you can also have these controls in your all activity. As you are driving the scooter or bicycle, you have brakes that is controlling your speeds, and also when you have got a direction with your handles and steering, which gives you a proper direction. But controlling also plays a vital role. As we proceed in the session, you'll come to know that what is controlling. So controlling is the last function of management process. Controlling can be defined as comparison of actual performance with the planned performance. If there is any difference, so if planned performance is not equal to the actual performance, or vice versa, you can say that actual performance is not matching with the planned performance. Whatever you planned is not equal to whatever you actually gain, right? Then if there is any difference or deviation, then finding the reasons for such difference and taking corrective actions to minimize the deviation so that actual performance matches with the planned performance. So here the controlling process ends. Remember, it is not only to compare actual and the planned process. No, it further, whatever deviations, whatever differences occur, as we could not achieve our goals that was being set, the actual performance is not actually matching with the planned performance, then there may be some problems, there may be some deviations, there may be some causes for not achieving your actual performance, there may be some causes. So what are those causes? We need to find it out. These are called deviations. That I suppose we are planning to produce 500 washing machines, but we could produce only 250 washing machines, that is only half of them. So what went wrong? Our planning was something like to produce 500 washing machines, but we could not do that. We could not achieve that. We could only produce half of them. So what were the causes that we could not achieve this? So that has to be found out, and these are called deviations. That deviations has to be solved by taking some important steps. These where so that we take such type of steps so that your planned performances start matching with the actual performance. It is very simple, but very important. So here, importance of controlling is also being explained here. Here I have said high coordination gem. This is your short form that you can see. High coordination gem. High coordination, not high, high coordination gem. So helps in achieving organizational goals. This is high coordination gem is a short form that you can memorize it. You can have your own these acronyms. These are called acronyms. You can frame your own. This is how I have done here for you. So helps in achieving organizational goal, improving employees motivation,
facilitates controlling, judging accuracy of standards, ensuring orders and discipline, making efficient use of resources, where E is missing. Efficient use of resources is there, and short form is high coordination gem. So helps in achieving organizational goal. Of course, we have to compare actual and the planned performance. So where we went wrong, what was the deviation? We'll just find it out, so that what will happen? We can achieve our organizational goal. As I told you that you plan to score 80 marks, but you got 65. Where you went wrong? Which chapter you did not work properly? Where you which answer you were not able to attempt properly? So that has to be analyzed. And then if you just put that efforts and you remove your deviations, of course you will be able to achieve the goals. So it helps in achieving a goal, improving employees motivation. Definitely results always motivate the person. So if you are going towards your direction, if you are expecting 80 marks and you just are getting something like 78 or 79 marks, definitely you will be motivated. You say that my goal is very near, almost I've done. So this is how you get the motivation. And employees also in organization, they get motivation because they are towards their goal. Controlling helps them to find out their faults. Controlling helps them to find out where the errors will be committed by them, so that they get motivated, because they now know that what actions they are going to do to remove that errors, and so that they achieve the goals. Judging accuracies of standard. Yes, this is also very important. So if you want to compare your planned performance with the actual performance, there should be a standard. There is a standard. What is the standard? Planned performance is a standard, and actual performance is really actual performance that is being done. So whatever the current performance is done, it has to be compared with the standards. So sometimes what happens, that your standard may be wrong. You might have overjudged, over planned, over estimated something. Say for example, you have got very limited resource, but you are so excited to do certain activities. You have been watching some motivational programs, and you have been motivated like anything. So you're expecting that there are only 3 days left in examination and I'll score 90 marks. So that is over or exaggerating goals. So sometimes you may not be achieve those exaggerating goals, so that your performance exactly is not matching with the planned performance. So that will help you to judge your standard, whether your standards were overestimated or underestimated. That is how you can understand. Ensuring orders and discipline, definitely controlling will go towards it, estimated goals. So it will also help you to direct towards the goal, because controlling also helps you to direct. So of course you will be the employees are there, they will be disciplined, working for removing their errors, focusing on their goals, and as such they will be disciplined. There will be proper order. Then making efficient use of resources, of course, that is also controlling importance, where resources has to be optimally utilized. That is always all each and every functions of management expense. And here also coordination, controlling helps the same thing. Okay, so we move on to the overall regular session, that is process of controlling. Now students, these are also very important point. You can see here a short diagram that is there. You can draw this if the process is being asked, maybe 4 marks or 5 marks if the case studies is there, and you have to just explain this process in 5 or 6 marks. You may attempt this the chart just to just impress the examiner. I don't say that they'll give you extra marks, not at all, but they may just get impressed by your presentation. One more thing, that it will be easier for you to also express, because you have drawn the chart. So that will be, if you are forgetting any of the point, you can just recollect and you can compare. Again, the controlling process comes here. You have got a standard performance of your chart, and when you write, that is your actual performance. So you can compare it and remove the errors, right? So let us see what is the process. Now here we are going to take some important points here. Setting up standards, of course, that standard has to be set. What standard you are going to achieve, right or not? Then measuring performance. So if you don't see, now if you don't set a standard, if anybody is here, if you set a standard that I want to score 80%, that's a setting of the standard. You cannot compare your current performance, whether you are doing good or bad, whether you are performing better or not better. You cannot judge, or you cannot analyze, or you cannot say that whether you are performing good or bad only if you have got a standard. Say for example, a company is there having standard of production of 1000 units, that's a standard. But if it is not able to produce that particular 1000 standard, so when they measure the performance,
they feel that they have failed in doing that. So setting up standard, measuring performance, comparing performance, this can be the third one, and analyzing the deviation. Students, this is very important, critical point, control and management by exception. Just I wind up just by फटाफट आपको critical point control और management by exceptions को थोड़ा बहुत खोल के अगर हम चाहते हैं कि भाई व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो और जो कोई मेजर प्रॉब्लम्स होता है, से फॉर एग्जांपल कॉस्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये करने से कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस so far as your cost of production is concerned, your profit is concerned. So if there is any major issue or there is any major deviation which you can see that is going to really affect your business like anything, your profit like anything, then that is a critical point control. We'll have these objectives here also in the next coming session, so you'll get a better idea about it. And management by exceptions, there are certain small deviations. तो कभी कभी छोटे छोटे डेविएशंस के पीछे भागते हो तो मेजर डेविएशंस आप चूक जाते हो, यही यहाँ पे बोला है. इफ यू रन आफ्टर द स्मॉल डेविएशन, छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप भागते हो छोटे छोटे डेविएशंस के लिए, then you may not be able to, you just will manager will end up nowhere. Basically, you will just skip out all the important measures also, right? So then taking corrective actions and the feedback. These are the 6 points that is very important. Standard set करना, measuring the performance, then measure करने के बाद compare करेंगे, compare करने के बाद analyze करेंगे, analyze करने में दो टेक्निक्स है, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है. इसके बाद हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं एंड देन द फीडबैक. ओके, so students, finally we start with the session. Previously there are some simple questions and then we'll come to some core questions, so we just hurry up. With the help of which function the management can know not only about deficiency in performance, but it also help management to know whether standards, to know that whether the standards, yeah, to whether the standards or plan are set correctly. So deficiency भी हमें पता चलेगी, we will be able to know the about the deficiency also. So where the deficiency is, where from where you can find the deficiency, कहाँ से आ सकती है deficiency आ सकती है कहाँ से. So of course we are when we are planning and we are comparing, so we will just by comparing we'll come to know that where the deficiency lies और वो कौन सा function है. तो of course planning, staffing, organizing, controlling, तो controlling ही है, ये भी हमने पढ़ा. Then we have got next MCQ which is on your screen. Which of the following is not a controlling process? पहले भी हमने we just had a controlling process. So which is not a controlling process? What is that? Setting up standard is a controlling process. Yes. Then another is measuring performance. That is also one of the क्या है? Of course, that is also controlling process. Supervision, yes, this is not the, you can say, controlling process. Supervision कहाँ पे आता है आपको पता चलना होगा. That is corrective actions. These are also our process of controlling. So yes, you have just right answer. SC supervision is not the controlling. So another MCQ is on your screen. An accurate control system revises standard from time to time to match with the standard. Which importance of controlling is highlighted? We have discussed before that controlling का पहले भी हमने डिस्कस कर चुका है आगे जाके. तो accurate control system देखते हैं ऑप्शंस क्या है. Judging accuracy of standards, helping in achieving standards, making efficient use of resources and facilitates in controlling actions. So accurate control system revise standard from time to time to match with the standard. अगर हमारे स्टैंडर्ड्स है उसको हमें रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच नहीं कर सकते. वी नीड टू रिवाइज द स्टैंडर्ड ऑफ साइंस डिस्कस बिफोर. सो विच इंपॉर्टेंस क्या था? ऑफ कोर्स इज द जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. तो ये हमारा एमसीक्यू है. नेक्स्ट है सीधा आपके सामने है. मिस्टर प्रतीक गांधी nowadays is very famous, we all know. So Mr. Pratik Gandhi is a senior manager in a software consultancy firm. He regularly prepares performance report of his subordinates as a part of a. The step of controlling process is कौन सा है? Right or not? He regularly prepares
performance report of his subordinate is a part of appraisal. The step of controlling process is what? So measuring performance, compare performance against standard, analyzing deviation, taking the corrective actions. Come on, students, you will answer yes. So measuring performance. Of course, what is performance appraisal? He will note it down that who has performed, क्या क्या उसने perform किया वो note down करता रहे. और वो रेगुलर केस में उसको क्या सौंपा था, what was the task that was given, whether he has performed or not, that is called performance appraisal. That will just explain his performance overall in the business or that is in the organization. So अगर हम performance appraisal करते हैं तो हम compare करते हैं उसको जो task दिया है वो उसने किया है. So we measure it by performance appraisal. Next MCQ is on your screen again. Ajay, a production manager of a company targeted to produce 1000 mobile phones, as he thought that in pandemic situation mobile phone will not be demanded. ऐसा उसने सोचा. But in contrast, अभी हम जानते हैं, everyone knows that the smartphones or you can say digital platform as such has just boosted up because of this pandemic. We are also one of the part of this particular activity. So, but in contrast, the mobile phones demand went up to 3000 units. Which aspect of controlling is discussing? चलो aspect है यहाँ. अभी हम करेंगे aspect क्या होते हैं और techniques क्या होते हैं, समझे? So there can be aspect considered as a or you can say what we say techniques भी. टेक्निक्स दो है, एक क्रिटिकल पॉइंट टेक्निक है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ये दो टेक्निक्स, समझे? तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं, if we talk about this aspect, we have got two aspects here. One is strategic and another is operational. Students, I would like to make it a very fast concept here, clearance about what is strategic control and what is operational control. Strategic controls, it really when you are just having some problems in your, if you feel that your planning is itself is wrong, whatever your plan itself is wrong, that is how we can see कि हमने जो प्लान किया वही गलत, हमने जो प्लान किया वही कुछ या तो एग्जैगरेटेड है या तो बहुत कम है या तो कुछ whatever हमने जो प्लान किया था वो कुछ सही नहीं जा रहा है, तो वो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आएगा. और इसी और ऑपरेशनल कंट्रोल में हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है उसमें कहाँ गलती है. प्लान ही सही है, ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड सब कुछ सही किया, लेकिन हमारे जो काम करने का ढंग है वो ठीक नहीं है. जस्ट आई एम टेलिंग इन अ वेरी सिंपल वे. सो ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक कंट्रोल आएगा. अभी इसने देखो क्या किया है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या है, तो इसने प्लान किया कितना 1000 मोबाइल का प्लान किया कर रखा है और उसने ये सिचुएशन को समझा ही नहीं, पैंडेमिक सिचुएशन, और डिमांड चली गई 3000 की. तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग इन जजिंग द, वो जो जज कर रहे एटमॉस्फेयर है तो जज कर रहे देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट. सो दैट इज अ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल विल बी द आंसर. दैट इज एन एस्पेक्ट. एंड टेक्निक्स जो मैंने बोला है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, दिस मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, these are all techniques. Or strategic control and operational management, that is operational control, these are aspects of control, right? So we'll just move further in the, for the next multiple choice question. Raj and Ram were friends. They both were working in Mcanaz Limited in production section. They noticed that the production was has slowed down than before. After injury, after inquiry, Raj could locate that a group of workers are facing problems while operating the machines. So after inquiry, Raj could locate that group of workers were facing problems while operating the machines. मतलब वो लोग जब काम कर रहे थे तब उनको प्रॉब्लम आ रहे थे. प्लानिंग ठीक था, लेकिन they were having problem while operating the machines. He with Ram soon found a solution and production started progressing as before. अभी सब कुछ नॉर्मल हो गया. तो which aspect है यहाँ पे, अभी तो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही गया होगा, ऑपरेशनल aspect है यहाँ पे, and that is the answer. Right. So we move further with the next MCQ. If deviations are KRAs, key areas, तो यहाँ पे क्या लगता है, ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखता है. याद करो, की एरियाज में प्रॉब्लम है, जो बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हमने मिस आउट किया है, एज हमने 1000 मोबाइल की बातें की थी, समझे? तो दैट्स अ की एरिया, दैट इज assessing the business environment, learning the business environment, analyzing the business environment. These are the key areas of business that has been forgotten by the person. So key areas और key areas में techniques कौन सी आती है,
तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये टेक्निक नहीं है, हम टेक्निक पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये है क्या है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक, सॉरी स्ट्रैटेजिक कंट्रोल भी टेक्निक है, क्रिटिकल पॉइंट भी टेक्निक है, और ऑपरेशनल भी टेक्निक है क्या? नहीं। कौन सी टेक्निक्स है? ठीक है, तो जो सीधा करते हैं, देखो केआरए में क्या आता है, ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजिक कंट्रोलर। तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज अ की एरिया। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मतलब प्लान ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट कर चुके हैं हम लोग, दैट इज द थिंग, समझे कि नहीं? और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन वो एस्पेक्ट है, और क्या है, स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल, समझे कि नहीं? So we move on. When mismatch between plan and actual performance is due to over and understating of plan, then it is called, when mismatch between plan and actual plan performance is due to over and understating of plan, it is a strategic cut. We are having problem in plans, that is a strategic cut. Remember that. Remember, this is very important aspect. Operational and strategic are together. Operational and strategic, these are all, I am repeating again, operational and strategic are both क्या है वो, तो मैनेज वो aspects है, these are all aspect, and management by exceptions and critical are the क्या है, techniques, ये techniques, so please don't forget this. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ही गलत है, ओवर अंडर प्लानिंग है, दिस इज कंसीडर द स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में है। एंड कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर interdependent function, both A and B are none of this. See, it is interdependent. Planning and controlling both are interdependent. If you don't plan, what you will control, and if you are controlling, so what you will control, that's the question. अगर कंट्रोलिंग करें तो क्या किसके साथ मैच करेंगे, इट्स अ प्रॉब्लम। एंड इफ यू डोंट कंट्रोल, इफ यू आर हैविंग अ कंट्रोलिंग एक्टिविटी, कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना, किसके साथ हम कंपेयर करें, क्योंकि कंट्रोलिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस करने की प्रोसेस है। तो अगर प्लानिंग ही नहीं किया है तो हम किसके साथ हम मैच करें, और अगर अकेला कंट्रोलिंग करेंगे तो किसके साथ मैच करेंगे? प्लान कर लिया तो प्लान सही है गलत कैसे प्रूव होगा, तो कंट्रोलिंग चाहिए। सो बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरडिपेंडेंट। A manager of a company gets information postal cost. This is again a very important point. A manager of company gets the information that postal cost has increased by 10%. Postal cost बढ़ी है 10%, and labor and raw material cost has increased by 5%. Which of the two situations are critical? बोलो कौन सा ज्यादा क्रिटिकल? ये पोस्टल खर्चा बढ़ा 10% तो उसको गिनने का है या कॉस्ट को गिनने? डेफिनेटली रॉ मटेरियल and labor cost, that is again a very key areas to focus. Remember this. Clear? So we move to the next multiple questions. Controlling is dash as well as dash function. उसके नेचर में है ये कंट्रोलिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, लीनियर लुकिंग, हॉरिजॉन्टल, और नन ऑफ दिस। तो क्या है, दोनों है भाई, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड भी है। ओके, कैसे? बैकवर्ड लुकिंग तो समझे, क्योंकि प्लान के साथ हमें कंपेयर करना, वी हैव टू कंपेयर विद द प्लान, दैट इज प्लान परफॉर्मेंस इज अ बैकवर्ड एक्टिविटी एंड करंट इज राइट नाउ वी आर हैविंग, सो बैकवर्ड लुकिंग तो बोल सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग कैसे होगा? फॉरवर्ड लुकिंग तो प्लानिंग है, ठीक है? तो कंट्रोलिंग खत्म नहीं होता, आई टोल्ड यू, जस्ट इफ यू व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ दिस, यू आर नॉट फिनिशिंग योर कंट्रोलिंग, आगे भी लेके जाना है, डेविएशंस को रिमूव करना है, so that is the reason it is also a forward looking activity. Controlling functions bring back the management cycle. Which function? कंट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग, और कंट्रोलिंग वापस हम कंट्रोल करके वापस हम एक्टिविटी को कौन से फंक्शन में वापस लाने वाले हैं? तो पहले क्या किया था, प्लानिंग किया था, ठीक है, और प्लानिंग के मुताबिक हमें हम नहीं जा रहे हैं, सो वी आर कंट्रोलिंग इट, अप्लाइंग द कंट्रोल एक्टिविटीज, removing the deviations and putting it back everything to the according to the plan. So that's it. B is your answer. Next multiple. A manager of laptop producing company planned to produce 200 laptops in a month. The actual production went up to 250 laptops, which deviation is discussed here. So ये negative है, skewed है, positive है, all of these. So definitely it is a positive deviation.
ये कभी कभी क्या होता है कि जब हम अंडर प्लानिंग करते हैं, हमारा गोल को अंडर एस्टिमेट करते हैं, then this happens. Sometimes we feel that we are not so good in studies. We feel that हाँ भाई चलो 60-65 आ जाते हैं, लेकिन आते हैं 80, तो आपने क्या किया, अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया. This happens many times. So that is positive है ये, क्योंकि सोचा था कम, आया ज्यादा. If the deviation is minor, which corrective steps should be taken by the manager? This is again an important one. वो redesign करेगा प्लान, स्टॉप वर्किंग ऑन दिस प्लान के नहीं करना ही नहीं कुछ, इतना डेविएशन है, डिसमिस द एम्प्लॉइज को निकाल देगा कि भाई चल भाई निकलो, और नो करेक्टिव मेजर्स. अभी मैंने आगे ही बोला था, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस की बात की थी, दैट माइनर करेक्टिव स्टेप्स, माइनर तो ले लेना है, दैट्स इट. सो एक्चुअली वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट. सो एज सच वी मे नॉट टेक एनी करेक्टिव एक्शंस. समझे, कोई जरूरत ही नहीं, छोटा सा डेविएशन, इट्स ओके, होगा हो जाएगा, आगे प्रोसेस में कवर हो जाएगा. Okay, so this is the point. Dash is the merit of MBE, management by exceptions. MBE का मतलब है management by exceptions, short form books में भी दिए हैं. तो क्या है, helps in taking corrective measures, minimizes the deviation, focuses attention of managers on significant matters, helps in decision making. किस पर है, तो it focuses attention of manager on significant matters, क्योंकि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस बेसिकली है क्या, कि छोटी छोटी बातों को निग्लेक्ट करके क्या करना है, फोकस करना है मेन चीजों पे, है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड? सेल्स वॉल्यूम, लेबर टर्नओवर, एफिशिएंसी लेवल ऑफ लेबर, और ए एंड बी. एफिशिएंसी लेवल ऑफ लेबर हम मेजर कर सकते हैं क्वांटिटेटिव, सोचो, तब तक ये आंसर डिस्प्ले हो गया. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, समझे कि नहीं? सेल्स वॉल्यूम, लेबर टर्नओवर, एफिशिएंसी ऑफ लेबर. ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी, ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव आएगा, आगे है वो क्वालिटेटिव था, तो यहाँ पे है सेल्स एंड जो ए एंड बी है वो वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. आगे जो प्रीवियस हमने किया दैट वाज अब क्वालिटेटिव, वहां पे थोड़ी टाइपिंग एरर थी, तो क्वांटिटेटिव नहीं आएगा, अगले 16th के क्वेश्चन में इट विल बी क्वालिटेटिव, और वहां पे एफिशिएंसी ऑफ लेबर आता है, क्योंकि क्वालिटेटिवली हम उसको मेजर कर सकते हैं. यू कैन नॉट मेजर एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि भाई तू 15 इतनी क्वांटिटी है तो ये ऐसा हम एफिशिएंसी को मेजर नहीं कर सकते. तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स इज सेल्स ए एंड बी, दैट इज सेल्स वॉल्यूम एंड लेबर टर्नओवर. इसके पहले के क्वेश्चन में जो क्वांटिटेटिव था इसके बदले क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होगा, और इसका आंसर आएगा एफिशिएंसी लेवल. एवरीबॉडी जस्ट मेक इट अ नोट देयर. हाउ कैन बी क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स और मैनेजर वर्क कैन बी एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मीटिंग ही हेल्ड, और नन ऑफ दिस. तो डेफिनेटली आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम लिमिट. क्वालिटेटिव चीजें टाइम लिमिट के आधार पे होती है, समझे कि नहीं? आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड, उस पर भी पढ़ा होगा आपने. अगर आपको चैप्टर 7 याद करवा दो तो इन डिफरेंट वेज मेथड जो है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, तो कभी क्वालिटेटिव काम करना होता है तो इट रिक्वायर्स टाइम, राइट? ऑन दैट बेसिस, बाय यूटिलाइजिंग द टाइम यू कैन हैव सम क्वालिटेटिव वर्क. तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स कैन बी मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. Now we come to the next part of your OTQs, that is fill in the blanks. Controlling not only checks performance but also judges accuracy of किसकी accuracy? Standards की accuracy. कंट्रोल हमारा स्टैंडर्ड जो हमने रखा है वो सही रखा है, गलत, कंट्रोलिंग ऐसा परफॉर्मेंस चेक करेगा. देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हैज ऑफ कोर्स कैसे रिलेशनशिप? रेसिप्रोकल. प्लानिंग है फॉरवर्ड लुकिंग, हम ऐसा बोल सकते हैं, और कंट्रोलिंग है बैकवर्ड लुकिंग. नो डाउट इट इज बोथ. कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग बोथ आर फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों है. बेसिकली रेसिप्रोकल है. क्या प्लान में क्या आएगा, हमने क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और हमने क्या किया. सो इट इज टोटली रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बोलते हैं इसको. देन प्लानिंग इज पर्सपेक्टिव, वेयरएज कंट्रोलिंग इज क्या है? इवैल्यूएटिंग. प्लानिंग एक पर्सपेक्टिव, भाई हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. But if this indeed controlling will evaluate, it will
just compare original plan with the actual, that is original performance with the actual performance, right? Then controlling is performed at all levels. Yes, again planning, अगर सोचो सिंपल लॉजिक है, अगर प्लानिंग है वो एवरी लेवल पे, अगर हम परफॉर्म प्लानिंग एवरी लेवल पे हो सकता है, टॉप मिडल बॉटम सब पे अगर प्लानिंग हो सकता है, तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग गोस पैरेलल. सो डेफिनेटली टॉप लेवल में भी कंट्रोलिंग होगा, मिडल लेवल पे एंड also in the bottom level, and also it is omnipresent also. We can say controlling also it's an omnipresent, because if management is omnipresent, planning be omnipresent है, and controlling भी ऐसा है. So it is there in the all levels. Then we have got planning provides dash for controlling. What planning provides? Dash for controlling a base. It provides a base for. ओके, सो अगर प्लानिंग है, कंट्रोलिंग करना है, आगे भी हमने पढ़ा है, डिस्कस कर चुके. अगर कंट्रोलिंग करना है तो क्या बेस, कौन से बेस पे कंट्रोल करो, प्लानिंग होगा तो, समझे? सो डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. कौन सा है? फीडबैक. ऑफ कोर्स फीडबैक विल बी द लास्ट स्टेप फॉर कंट्रोल, दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस स्टार्टिंग में किया है. Under critical point control, the departments of whole organizations are divided into dash and dash. What is that? Key areas and non-key. Students, again, I would like to make some clearance here. Key areas strategic control के base पे है, और non-key areas can be management by exceptions. So key areas are those areas which is really compelling to change your standards, to change your plan, to change everything from the bottom that you have already framed. And non-keys areas can be, you can just skip it out कि okay देख लेंगे इसको, कुछ इतना important है नहीं. तो जैसे पोस्टल एक्सपेंसेस थे वो 10% थे, उसी तरह आप इसको इग्नोर कर सकते, समझे? Then dash is a communication regarding mismatch between actual and planned out and correctly action. Dash is a communication regarding mismatch between actual plan actual plan output and corrective actions. What is that? What is that? So that is a feedback. Remember, this is a definition of feedback. Is a communication regarding mismatch between actual and plan output and corrective action. कौन सा हमारा प्लान हुआ है, आउटपुट क्या है, एक्चुअल आउटपुट क्या है, प्लान आउटपुट क्या है, और उसमें मिसमैच कौन से, what will be the corrective actions that is to be taken. Here the feedback is there, and here controlling process gets over as we give the feedback. Dash and dash are two aspects of control. So strategic, I told you before also that aspect go है, एक strategic control है and another is a operational control. These are two aspects of controlling. Now we come to the next question, that is called true or false. Let us see how it is going on. Controlling ends after comparing planned performances with actual performance. I told you that it is not going to end as we compare planned performance with actual performance. दोनों end नहीं हो जाने वाले. Controlling process हमने compare किया actual performance. चलो सोचते हैं कि हमारा, आपने सोचा है कि 80% आने वाले हैं, लेकिन 80% नहीं आते, तो आपके प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में डेविएशन है. बस तो आप सो जाओगे कि अभी कुछ नहीं हो, चलो हो गया, बात खत्म. नहीं, व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट वेयर यू वेंट रॉन्ग, कहां पे गलती हो गई, उसको सुधारना. तो कंट्रोलिंग आगे भी बढ़ेगा इससे. सो आंसर इज ट्रू और फॉल्स. तो डेफिनेटली इट इज फॉल्स, समझे? बिकॉज कंट्रोलिंग एक्चुअली फाइंड्स डेविएशन, एक्चुअल रीजंस एंड सॉल्यूशन फॉर सच डेविएशन. तो फाइंड करेगा रीजन कि क्या हुआ, गलती कहां हुई, क्यों प्रोडक्शन हमने सोचा था इससे कम हो गया, क्यों कॉस्ट बढ़ गई, क्यों लेबरर्स है वो छोड़ छोड़ के चले जा, भाई देयर इज हाई लेबर टर्न. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय ऑनेस्टली. अगर आप देखो कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, कहां पे वे वर्कर्स ना खुश है, कौन सी चीजों पे इनको प्रॉब्लम्स है, दैट कैन बी स्टडीड आउट एंड देन सॉल्यूशन कैन बी फाउंड. सो controlling is there never ends here. So then we have got Tom and Jerry are partners, right? Tom is always after workers. Yeah. So Tom and Jerry are partners. Tom is always after work. वर्कर के पीछे पड़ा रहता है इन शॉर्ट.
he finds petty faults, छोटे छोटे फॉल्ट के पीछे पड़ा होता है in them and waste time, और उनको बताता रहता है कि ऐसे बहुत छोटी छोटी बात है, ठीक है, and he really is after the workers like anything. अभी जेरी थोड़ा ऐसा नहीं है, जेरी always tell him not to waste time in petty issues as they cannot focus on the major problem. Is Jerry right? वो सही है गलत, समझे, whether he is right or not. तो ये भी एक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये सही है. तो मैनेजमेंट who tries to control everything end up doing nothing. This is the key line of management by exception. Manager who tries to control everything ends up controlling nothing. Then without comparing performance against standard is an importance of controlling true or false. So it is false. Why? Because it is the third step of controlling. Yes. सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट किया, मेजर किया और इसके बाद कंपेयर करें. समझ रहे हो? कंपेयर करने के बाद we'll find it out what are the deviations and all that, and then we'll take our steps and then we'll have the feedback. Okay, so this is how it is a false statement. Controlling simplifies the task of supervisor. अब इस सुपरविजन और कंट्रोलिंग को क्या लेना देना? That's a question. क्या कंट्रोलिंग की वजह से अगर कंट्रोलिंग एक्टिविटी हो रही है, सपोज प्लांट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, विल सुपरवाइजर टास्क इज सिंप्लीफाइड? हो जाएगा ना, क्योंकि सुपरविजन में यही तो कर रहे हैं. सुपरविजन में यही तो करना है, जस्ट टू सी व्हाई द employees are doing the job. What is supervision? It is a process or it's an activity just to monitor and to supervise or monitor the employees while they are performing the job. जब वो काम करे तो उनको supervise और controlling अपने आप हो जाएगा, क्योंकि उनको बोल सकते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो ठीक, डायरेक्शन भी इसमें आ जाएगा, डायरेक्शन का ये एलिमेंट है हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा. That is the point. Because देखो, controlling verifies whether activities are done, when activities are undertaken in conformity with plan, and supervisor supervises employees while they are performing the job. So while verifying the activities, task of supervision, the work is done. Automatically supervision का work हो ही जाता है जब हम compare करते हैं. If anything goes wrong, with key activities, the entire organization suffers. Key एरियाज है वो गलत हो रहे हैं. हमने कुछ सोचा था और हो कुछ और रहा है, हमने कुछ प्लान और किया था और वो कुछ और अलग हो रहा है. तो क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी? डेफिनेटली करेगी, बिकॉज इट रिफर्स टू द यूज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल व्हाइल एनालाइजिंग द डेविएशंस. व्हेन वी एनालाइज, these are the key areas where the critical point control is necessary. Okay, now deviations can be negative. क्या वो नेगेटिव ही हो सकता है डेविएशन? हमने 80% एक्सपेक्ट किए थे, 60 ऐसा ही हर वक्त हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि 80% एक्सपेक्ट करो 85 आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो नो, इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो. डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है क्योंकि हमने हमारा स्टैंडर्ड है वो अंडर एस्टिमेट किया हुआ है, वो रीजन हो सकता है. द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस आर करेक्ट और इनकरेक्ट. चलो देखते हैं ये स्टेप्स को. सेटिंग अप स्टैंडर्ड, दूसरा है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा है corrective actions, and fourth is analyzing deviation, fifth है feedback, and sixth है comparing standards. ये गलत है या सही? ऑफ कोर्स ये गलत है, तो सही क्या होगा? सही ऑफ कोर्स फॉल्स स्टेटमेंट सही. थर्ड स्टेप विल बी comparing performance with standard, fifth step will be corrective action, and sixth step will be feedback. So I arranged for you. First is setting up standard, second is measuring performance, third will be comparing performance with the standard instead of taking corrective actions, right? Then fourth will be analyzing deviations. Okay, समझे? fifth step will be taking corrective actions. Taking corrective actions third है, तो इसके मतलब ये fifth में आएगा. And sixth will be feedback. जो feedback fifth है वो sixth step. So this is the right sequence of your controlling process. Then we move further. Controlling is a task of supervisory level. Supervisory level का है? नहीं. It is a task for all the levels. अभी हमने पढ़ा कि controlling है, it is for the every level. तो सिर्फ अकेला supervisory level का नहीं है. It is for all the levels. Taking corrective actions in controlling process is a step which compels event to conform plan. अगर हम corrective actions in controlling process में लेते हैं
ठीक है, तो विच कंपेल्स इवेंट्स टू कंफर्म प्लान। देखते हैं, हाँ भाई ऐसा ही है, क्योंकि वही तो काम है हमारा, वही तो कंट्रोलिंग का काम है, टू जस्ट मैच विद द प्लान्ड प्रोसेस एंड टू रिमूव द डेविएशन, यही तो हो रहा है। तो मैच द फॉलोइंग, अभी एक छोटा सा पॉइंट है, इसको कर लेते हैं। कॉजेज एंड एक्शन दोनों को आपको क्या करना है, मैच करना है। लैक ऑफ मोटिवेशन के सामने गेट मशीनरी रिपेयर, पावर ब्रेकडाउन के सामने ऑफर इंसेंटिव दिया हुआ है, फॉल्ट इन मशीनरी के सामने इंस्टॉल जनरेटर किया हुआ है। तो आंसर है 1 से बी है, दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन में इंस्टॉलिंग जनरेटर नहीं आएगा, लैक ऑफ मोटिवेशन में ऑफर इंसेंटिव, इंसेंटिव मोटिवेट ऑफर करने से मोटिवेशन दूर हो जाएगा। पावर ब्रेकडाउन दैट इज सेकंड वन, इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स ये मेजर्स है, करेक्टिव मेजर्स हम कर रहे हैं, कंट्रोलिंग के बाद हम मेजर्स के लिए लैक ऑफ मोटिवेशन में ऑफर इंसेंटिव, पावर ब्रेकडाउन में डेफिनेटली इंस्टॉल जनरेटर, और अगर मशीनरी फॉल्ट है तो उसको क्या करवाएं, ऑफ कोर्स रिपेयर भी करवाएं, रिपेयर, अगर बेचने की जरूरत हो तो बेच भी देंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास, यू हैव टू जस्ट सुटेबल ऑप्शन करना है। नंबर 1, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, KRA और एनालाइजिंग डेविएशन। तो फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन के सामने प्रोसेस आएगा, देखते हैं। KRA के मतलब के सामने इंपॉर्टेंस आएगा, देखते हैं। एनालाइजिंग डेविएशन के सामने पॉइंट आएगा, देखते हैं व्हाट इज द राइट ऑप्शन। तो 1 के सामने बी है, डेफिनेटली फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, वो हमारी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद KRA किससे रिलेट करता है, क्रिटिकल पॉइंट मेथड से रिलेट करता है। एंड एनालाइजिंग डेविएशन इट इज वन प्रोसेस का एक स्टेप है कंट्रोलिंग। सो ये है हमारे MCQs. Now we move on to the this descriptive types. Students, so this can be somewhat देखो मैंने यहाँ पे थोड़े से लंबे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, आंसर्स में भी कैन बी द शॉर्टर वन, but why I've included it because we can just have more practice or more idea about this chapter and concepts. So Rajesh Sweet is well known for his quality sweets. Vikram, the owner of Rajesh Sweets, was worried as his sales declined. चिंता में पड़ गया कि भाई मेरे सेल्स तो डिक्लाइन हो रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, कंट्रोलिंग फंक्शन अप्लाई किया। देखो, आफ्टर इंक्वायरी हिज सेल्स मैनेजर रिपोर्टेड सम कंप्लेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्वीट। तो भाई उसने क्या किया, परफॉर्मेंस जो प्लांट परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था, तो उसने इसको अच्छी तरह मेजरमेंट किया कि क्या हो रहा है, उसमें जो डेविएशन से वो निकाले, और डेविएशन से पता चला वो डेविएशन सबसे प्रॉब्लमेटिक था कौन सा, that they were having complaints about the quality of sweet, स्वीट की क्वालिटी कुछ ठीक नहीं थी पहले जैसी। राजेश ने ऑर्डर की स्वीट और देखा कि भाई कोई डिफेक्ट है, चखी, उसने खुद की अपनी स्वीट्स को ऑर्डर किया एंड करेक्टेड द डिफेक्ट इन द क्वालिटी। तुरंत उसने ये स्टेप्स ले लिया। आइडेंटिफाई द फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, ये कंट्रोलिंग फंक्शन। देखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्लियरली पूछा है, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, वही फंक्शन है, उसमें से कंट्रोलिंग है। देन कम्स नेक्स्ट, name the function that brings the deviation activity back to plan. Again, the same answer is that controlling, right? Then we have got Mahima Jain is a senior manager. Mahima Jain है, वो senior manager है in advisory service department of Kodes Limited. She regularly prepares performance report for her subordinates as a part of appraisal. Appraisal का मतलब I before also we just had this same thing. Identify the step of control. कौन सा स्टेप है ये कंट्रोलिंग का, तो ये है हमारा स्टेप मेजरिंग द परफॉर्मेंस। आगे भी यही हुआ था हमारा, तो यहाँ पे हमने मेजर किया है परफॉर्मेंस अप्रेजल थ्रू वी आर मेजरिंग द परफॉर्मेंस। ओके, नाउ अमन मैनेजर है वो, अमन इज अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी एज वाज टोल्ड टू कंपेयर प्लान्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। While comparing, he found that there were lots of deviation. Still, company could not recover from its poor performance. This happened because Aman forgot the most important step of controlling cost. Identify. अभी इसको थोड़ा समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। Aman manager is told to compare plant performance. Okay, चलो हो गया। While comparing, he found that there were lots of deviation. वो तो फाइंड कर चुका है। Still, company could not recover फ्रॉम हिज पुअर परफॉर्मेंस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अमन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया था। क्या भूल गया था, क्या उसने
कंपेयर नहीं किया था, अगर कंपेयर नहीं किया होगा परफॉर्मेंस को तो डेविएशंस का पता ही नहीं चला। ओके चलो, मेजर किया वो भी समझ में आ गया, स्टैंडर्ड सेट किया होंगे वो भी है, राइट और नॉट। उसने क्या डेविएशंस के रिलेटेड उसको स्टेप्स लेने थे, लेकिन वो कब लेगा जब डेविएशंस के बारे में वो जानेगा तब। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया, वो बताना भूल गया है कि ये कौन से मेजर उसने तो फाइंड कर लिया लेकिन वो रिपोर्ट करना भूल गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। जस्ट फॉरगॉट टू गिव द फीडबैक टू द इज टॉप लेवल, और ये भी उसके जो नेक्स्ट मैनेजर है उसको। देन हाउ MBE दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन सेव्स। आगे भी हमने टॉम एंड जेरी का केस किया था, रिमेंबर दैट जस्ट टॉम वाज आफ्टर द वर्कर्स एंड ही वाज जस्ट वेस्टिंग पेटी पेटी प्रॉब्लम्स के, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के वो वेस्ट करता था टाइम, वाज जस्ट ऑलवेज आफ्टर द वर्क। इससे दो प्रॉब्लम है, वर्कर्स भी इरिटेट हो जाते हैं और टाइम भी बिगड़ता है, राइट, एंड वर्कर कैन नॉट फोकस ऑन सम मेजर एरिया। एंड सो जेरी सजेस्टेड कि भाई ऐसा मत कर, ये छोटी छोटी बातों को लेट गो कर, जो मेन है उस पर ध्यान दे। तो डेफिनेटली अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्शंस कर लेंगे, right, छोटे छोटे problems, small deviations, if they are ignored, if it is not hampering the overall production activity or overall progress of the business, we may let it go. So that is how it will save the time. So it saves time because by ignoring minor deviations, much time can be spent on the major issues of the business, or you can say management, right? Or descriptive है, while addressing to the employees. Now this is very important point, we'll just see how that goes. So while addressing to its employee, the managing director of X Limited put it that controlling is like a traffic signal which shows the right way toward the goal. Here is addressing which importance of controlling. This is how the tricky one is. Remember students, क्या कर रहा है यहाँ पे? I'll just give you 2-3 seconds to see how you are answering. So while I repeat here, while addressing to this is employee, the managing director of X Limited put it that controlling is a traffic, just like a traffic, which shows the right way. This is the keyword, which shows the right way towards the goal. Here is addressing which importance? Is addressing helping in achieving organization. Students, here there is a keyword which is introduced here in the answer question. तो ये केस स्टडीज का काम कैसा है, वो क्वेश्चन में ही आंसर हो। रिमेंबर दैट if you are knowing properly what is the concept, what are the keywords, you'll be able to judge it very easily. So next one is an expert was called. Now see, this is also one of the tricky one. An expert was called to conduct a seminar on management function. Planning, organizing, dieting, controlling, ये सब मैनेजमेंट फंक्शन है और उस पर उसको बुलाया गया। अब क्या हुआ? He started his lecture with how to plan the activities for achieving goals. He added that it is essential to check whether the activities are going as per plan or not. Right? Activities as नहीं है, are going as per plan or not. ये उसको चेक करने के लिए बोला। Which function of management he is talking about? Taking about नहीं है, talking about. I'm sorry, it is talking about नहीं है, taking about है। तो क्या कर रहा है वो यहाँ पे? What is doing? देखते हैं। यहाँ पे है टॉकिंग अबाउट, राइट, और यहाँ पे है आर, एक्टिविटीज आर गोइंग एज पर प्लान और नॉट। तो भाई क्या कर रहा है वो? सेमिनार कंडक्ट किया उसने और बोला कि भाई एक्टिविटीज को प्लान करना पड़ेगा टू गोल अचीव करने के, लेकिन उसको चेक भी करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट चेकिंग एक्टिविटी कॉल्ड? इट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग। अभी आपको पता है ये कंट्रोलिंग है। सो स्टूडेंट्स, we just finished the session here. I hope you might have just got some idea about this chapter. This is a very small chapter, एकदम छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसमें जितने हो सके इतने मैंने MCQs वगैरह इंक्लूड करने की कोशिश की है। I try to include the most of the questions here in the this webinar. So I really thank you all of you and this one mark solution platform that they are giving me very good opportunities here. And I hope students you must be have just got some benefit on this. So you just give your feedbacks as such, or if you got any doubts, you can write in the this chat box. Okay, all of you have a nice time. Thank you very much.
Thank you so much, sir, for sparing a very valuable time with us and very useful content with us. And मैंने फीडबैक फॉर्म लाइव कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिया है, प्लीज़ आप उसको फिल कर दीजिए. और इफ़ एनी क्वेरीज आर देयर अबाउट दिस सेशन, प्लीज़ शेयर इन लाइव कमेंट बॉक्स. सर विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. और प्लीज़ आप फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए, जिससे कि आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी मिल जाए आपके मेल आईडी पर. और आई थिंक ये 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ के लिए सर ने बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराया है, जो ये चैप्टर का है. आई थिंक इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट. थैंक यू सो मच सर. Okay, man. Thanks you. Thanks a lot, students. Have a nice time and just prepare well. Okay, bye, all of you. थैंक यू.